Yeah. And quickly let me know everyone if my screen is visible or not. सबको visible है? Right, let me zoom it out a bit. Right. And guys, यहाँ पे there are like 330 people, but chat पे I can read all your chats, right? 330 people है, chat मुझे दिखने भी नहीं चाहिए. Right, so everyone should answer. Yes? Okay. So before we start, just give me a second. Just give me a second. Yeah, so this is our day 4. I'll start with index.html file. And in here, to write JavaScript, हमारे पास दो तरीके थे, right? We had two ways of writing JavaScript for our sake, right? First one was we can go and create a different file. एक नया file बनाएंगे, we can name it index.js and इसको terminal पे run करेंगे. What was the other way? Other way? In our console, right? Basically, यहाँ पे we can go and add a script tag, and script tag में we can run this thing on live server, right? Right? ठीक है. Let's go and run this thing on live server. So we'll do a quick recap first, right? And जो भी हमने last lecture में किया था, we'll do a quick recap और उसके बाद we'll start following it. देख, in here यहाँ पे मुझे inspect पे click करना है and I'll go for my console. Right. So now if I go and write something, let's say if I write console, yeah. Yeah, my bad. So all you have to do is you have to write console.log and यहाँ पे we can go and start writing things. Right. तो इस तरीके से हम लोग JavaScript में print करते थे. Everyone. Right. ठीक है. But we don't always need a print statement. हमें क्या चाहिए? We need something to store our data. Right. कहाँ पे store करते हैं हम लोग? Quickly. In variables. In variables. In variables. Right. So we have some things which are called variables. Right. And in variables में क्या करते हैं? We store values. And ये values की क्या मतलब जो एक umbrella term होता है इनके लिए, what was that? Data type. Remember? Data type. Data type. Data type. Right. So यहाँ पे in here we used to put values which had some data types. Right. तो जब variable बनाते we can start with the keyword var and I can start naming it. Right. So let's say if I name this as num1, right? And it's num1 में I'm giving it a variable 25. Right. So if I go and create a variable like this num2 and then I give this num2 a value, am I doing it correct or am I doing it wrong? This one. ये भी correct है, ये भी correct है. Why so? Because in hindsight जब हम variable को ऐसे create करते हैं, it's still following the structure, right? कुछ दिनों में I'll teach you guys when we will reach advanced JS कि the structure is being followed even though हम directly define कर रहे हैं, right? So initially we just declare that variable, right? Then we assign that variable some value. And can I reassign this value? क्या मैं इस value को update कर सकता हूँ? Can I put some other value aside from that? Yes. So we can go and do num2 equals to, let's say 50. Right. So अगर मैं यहाँ पे जाके if I uncomment this console.log num2, what should I be getting? What should I be getting? Should I be getting 46 या 50? Right. तो whichever comes later ना, जो भी बाद में आता है, that will be applied. Right. Top to bottom, left to right. HTML में सीखा था, JavaScript में भी काम. Clear? Clear? ठीक है, ठीक है. Now we have these two variables. Let's say I want to create a relation between these two. I want to check if something is greater than, less than, or equals to. How can I do that? पहले तो ये बताओ. If I go and let me just comment this one out again. If I go and do num2 equals to num1, what are we expecting?
क्या एक्सपेक्ट करूं? फॉल्स, फॉल्स। वाई, वाई? कितने लोगों को लग रहा है कि एरर आने वाला है? इफ यू गाइज रिमेंबर, इक्वल कैसे चेक करते थे? इक्वल, was it double equal? Double equal, right? In here we are just writing single equal. हम basically क्या कर रहे हैं? We are taking this num2 and we are assigning it the value of num, right? So if I console it now, if I console it, we'll see कि it's printing 25. Is that expected? Is that expected? Expected? Okay, very good. Now if I go and make this thing a double equals, now what? अब क्या होगा? For those who are not getting it, why single equals to is your assigning operator, right? तो हमने क्या किया, rather than checking equality, हम क्या कर रहे हैं, हम num2 को, which currently has a value of 50, we're assigning it a value of 25, which is this num1. That's why we were printing num1 का value, right? Now if I kept a double equals to in here, I'll be checking if they are equal or not. अभी क्या आएगा? False. Why? Why? Because they are not equal. ठीक, so because they are not equal, right? उसी तरीके से I can store a different data type in my variables or not. Let's say कि मैंने अपने variable को एक number से assign किया, can I give it a different data type? Why? Because JavaScript was dash kind of language. What was that dash? Okay, okay. So it was a loosely typed language, right? Remember loosely type, right? It does not checks the kind of data type in your runtime, right? तो अगर मैं जाके यहाँ पे num2 equals to 25 कर दूं, it's still fine, right? वहीं पे if I go and pick languages like Java and all, वहां पे क्या होगा? We won't be able to do this easily. ठीक, all right, चलिए. Now we have given num2 a value of 25 and num1 has a value of 25 again. If I uncomment this, what do you guys think? What's gonna happen? It's gonna be true or it's gonna be false. Okay, so I can see both. Let's uncomment it and let's see. So it's true, right? True है. Why so? Because the number is there and there's this string. Is there any plus sign in here? जब भी relation create हो रहा है, is there any plus sign in there? Right? तो concatenation is not gonna happen. अब क्या हो रहा है? Type conversion is taking place और string is getting checked as a number, right? To prevent this kind of thing, to prevent just the value, हम क्या करते हैं? We go and use a triple equals, right? अभी is it false? Right? So now what is happening? सिर्फ value नहीं check हो रहा है, the data type is also getting checked, right? So in hindsight, value and data type both are getting checked. Clear? Make sense? ठीक. उसके साथ then you guys remember कि हमने logical operators भी पढ़े थे, right? तो कितने logical operators थे? How many logical operators did we learn about? Three, right? So we had and operator, we had or operator, and we have not operator, right? Take it. I'm gonna write few things here. Tell me what do you guys think. 1 and 0. What do you guys think? क्या print होना? False. कितनों को लगता है we're gonna get an error? How many of you think we're gonna get an error? Okay, take it. So guys, keep a small thing in mind, na, कि JavaScript has some truthy and some falsy values, right? So basically, when we talked about, जब पहली बार JavaScript discuss कर रहे थे, we talked about कि what compiler does, it takes a high level language and converts it into a low level language, right? In that low level language, we were understanding things in 1 and 0, binary, remember? Binary में समझ रहे थे, right? So let's say if I tell you कि I'm creating a binary switch, right? मैं एक binary switch बना रहा हूँ. So if I wanna switch on that switch,
क्या करूंगा मैं? Will I turn the number to be 1 or will I turn it to be 0? If I want to on the switch, if I want to make the switch true, 1 होगा. वहीं पे if I wanted to make that switch to be false, क्या करता मैं? 0. Right? So that's exactly what's gonna happen. 1 is gonna be taken as true, 0 will be taken as false, and then finally you have a true. Right? True का data type क्या था? Data type क्या था? हो गया. Very good. चलो. So finally, and में क्या होता है? If you even encounter one false, everything turns out to be false. Right? So if I uncomment this, we are getting 0 or basically false. Right? वहीं पे if I go and make everything as true, right? If I go and make everything, let's say console.log, I can check either 1 or I'm checking true or I'm checking true again, right? So if I uncomment this, what's gonna happen? What's gonna happen? I'm gonna get true, right? So if I go for this, it's still 1 or true, right? But अगर मैं यहाँ पे जाके if I make a condition false and if I make this false also, मैं इसको भी 0 बना देता हूँ, what's gonna happen? It's still gonna be true. क्यों? Because it was exact opposite of and. एक भी condition true हुआ, that entire statement is gonna be true. Correct? Correct? ठीक है. So if I just show you guys, we have this as true. But if I take this entire statement and उसके आगे if I go and write this not operator, क्या आने वाला है? Now we are gonna get a falsy value, right? So if I go in here, you'll see we have false. ठीक. So that's how we were doing stuff, right? उसके बाद we had a block of code and if we want to run it multiple times, right? So हमने सीखा था कि we have functions for that, right? Again, always keep functions as an analogy for buttons, right? Button click is basically calling a function. How were we creating function? Function बना कैसे रहे थे? Function बना कैसे रहे थे? Okay. So basically, if you guys remember the syntax, हम function लिख रहे थे, then we were naming that function. Let's say I'm just calling it as greet, right? And then this is your block of code. Anything inside this will not run up until it's called yes or no, right? So if मैं इसके अंदर जाके लिखता हूँ console.log hi there, right? I'm not gonna run it, right? Up until मैं इस कोड को रन नहीं करता हूँ, इसको कॉल नहीं करता हूँ. Clear? And can I click this button as many times as I want? जितना मन उतना कॉल कर सकता हूँ. Yes or no? Will the output change? No. Right? Let's say I wanna take a input also. मुझे function में I wanna take a input. I wanna show it. Basically, I wanna say hi there and I want a username. Right? So I can pass it in here in my arguments. Right? So यहाँ पे let's say if I want to greet Virat, what I'll do is I'll put this here and I will take or access it in here. Right? So यहाँ पे I'll just write name. ठीक. Now I'll be accessing this value. If I access name, right? So यहाँ पे जाके if I write common name, will I be updating based on whatever condition or whatever input I've passed, whatever argument I've passed? Right? So I can call it as many times as I want. All I have to do is I have to just change the name. Right? So there you go. ठीक. So how is this helping us? ये कोड को reusable बना रहा है. We have to not write same code again and again if it has to do exact same thing. Correct? ठीक. All right. Now we learned about data type. Remember data type पढ़ रहे थे. Data type. So how many data types do you guys know? So far अभी तक कितने data type पता है? Okay. So we know about string, we know about number, we know about booleans. Right? If you guys have gone through notes, बाकी भी पता लग गया होंगे. Right? But mainly we have these
प्लस जो एरे पढ़ा था हमने, द एरे दैट वी लर्नड अबाउट, इट्स ऑल्सो अ डेटा, राइट. शॉर्टली विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, राइट. तो बेसिकली ये जो है ना, ये डिविजन, इट्स अ बिट मोर देन व्हाट यू गाइस परसीव. बेसिकली हमारा जो डेटा टाइप होता है ना, इट्स डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, राइट. वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है. वी हैव अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का मतलब एनीवन, नो वन, पुराना, पुराना, राइट, राइट. तो द ओल्डर काइंड ऑफ डेटा टाइप इज योर प्रिमिटिव डेटा टाइप. इसको यू कैन टेक इट एज अ क्यू टू रिमेंबर कि जो नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव के बीच में मेन डिफरेंस है ना, primitives are okay, right? Primitive data types are basically immutable, right, or non changeable. ठीक, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, whereas नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर म्यूटेबल, राइट, और इन अदर लैंग्वेजेस चेंजेबल और अपडेटेबल. ठीक, ठीक. So now in primitive and non-primitive data type, if I ask you guys, string को किस में डालोगे? Where do you want to put it? Remember last lecture उसमें हमने डिस्कस किया था कि what was difference between string and array. तो string primitive में जाएगा, array को कहाँ पे डालोगे? Array को कहाँ पे डालोगे? Non-primitive में, right? So in our primitive we have let's take this. We have string, we have numbers, we have boolean, and for now these are enough. And non-primitive में we have our array and we have our objects. ठीक. So objects will learn shortly कुछ दिनों में, और not कुछ दिनों में, today we'll learn about it. But now array makes sense कि वो mutable था, that's why it's in non-primitive. Makes sense? Makes sense? ठीक. So now a small thing that we want to discuss real quick. Just take this. So now let's say कि question है, we have a data structure, right? Remember data structure का क्या मतलब होता है? Somewhere we can store a data, right? Right. So far हमने देखा कि in array we can store multiple different data, right? And it's not have to be only number का array, only string का array. It can be a mixture, right? But let's say we have a data structure which is array, right? Let's say we have this array 2, 3, 10, 12 and 4, right? And इस array में I want to create a function which takes an array and वो return करता है हर एक element को double करके. Can we do that? Can we do that? Right? That's actually too easy of a thing, right? तो मैं एक function बनाऊंगा and मैं बोलूंगा double it, and in here I'll accept an array, right? मान लो इसको मैं करता हूँ an array, and in here what I'll do is I'll loop over this array. इस array पे I'll loop over, remember, loop over, right? Loop, we're gonna use for loop for here for now. तो for loop में क्या क्या लिखते थे? We have to write 3 statements, right? First one was gonna be what kind of index or what kind of variable do I wanna initialize my loop with, right? So array or string has index which starts from everyone. Zero से index start होता है, right? So should I take var I as 0? Let's say if I want to print the very last element, what should I be writing? Should I be writing I should be less than, we have 5, so I should be less than 5. Should I be writing that? That? Okay, so this thing is not dynamic, right? ये dynamic नहीं है. It's fine for this array, but let's say कि हम array का length बढ़ा देते हैं. That's not gonna work, right? हम function क्यों लिख रहे थे? To make it reusable piece of code. Right? So rather than going with a static number, we are going to go with array, or rather an array, जो कि हम accept कर रहे हैं, and that dot length.
right? And finally we want our index to increment as soon as we started, right? Ab all we have to do is we have to access this array ka element and we have to multiply it by 2. Why an array? This can be anything, right? The parameter we are accepting in here in this function, right? So this can be anything. आपके ऊपर है क्या नाम रखना, right? What I'm gonna do is basically finally I'm just gonna send double it and उसमें मैं ये array भेजने वाला हूँ, nothing else. Take so now in here, given that array is mutable, right? तो हम क्या करेंगे? We'll be accessing this an array, right? And I'll be putting an array I, and what I'll do is an array I into 2. Will this thing double each and every element in here? Double कर देगा? Double कर देगा, right? And finally, what I can do is I can just console.log array or an array. Right? So if I go and call this function with double it, I'm gonna call it with my this array. So double it and uske andar mein array pass. Right? So I'm getting each and everything, but it's doubled. Make sense? Make sense? Right? But there's a small issue. वो issue क्या है? Is this double array usable? हम वो double array को पकड़ के iterate कर सकते हैं क्या? आराम से सोचो और बताओ. Why can't we iterate over it? Because we're consoling it, right? सिर्फ हम उसकी वैल्यू कंसोल कर रहे हैं, we are not assigning it somewhere. So functions में एक property होती है, to fix this we can basically rather than printing this ना, we can just return that entire thing, right? तो क्या करते हैं हम लोग? We go and write a statement which is called return, and return में जाके we can write an array. तो अभी क्या होगा? Now this function, ये जो function call है ना, this can be used as a variable, right? So what I'll do is I'll store it in here. Let's say double variable. इसको मैं ये बोलूँ, and I'm storing it in. Right now I can actually use this. So if I go and do a console.log of double variable, na, you guys will see we're still getting that array, right? Right? It's getting doubled, but now we can even loop over it. So let's say if I go and write where I equals to 0, I is less than our double variable dot length, right? And I'll do a I plus plus. यहाँ पे if I do console.log double variable, I will see I'm printing each and every element. ठीक, तो the return statement is helping you guys to reuse जो भी हमने function में किया है, the value that we have updated in the function, right? So that's a very strong statement. Return. Check. All good so far? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है. Now let's say कि if I update the problem statement by a bit, मैं क्या कहता हूँ? I only wanna return the elements which are at even position, right? जो elements even position पे है, I just wanna print that. So can I update this function based on that? पहले तो ये बताओ, I'm talking about even position. So am I talking about ये element even है कि I'm talking about index? Index की बात होती है, index की बात होती है. ठीक, तो an array I नहीं करना है, we have to provide a if else condition but on I, right? So यहाँ पे जाके I'll do if I even odd कैसे चेक करते थे quickly? ठीक, mod 2, right? So if I mod 2 is equals to 0, हमें क्या करना है? We have to update this thing, right? And we are finally returning it. ठीक, so now can you guys see कि सिर्फ even positions वाले number update हो रहे हैं? Only even position double हो रहे हैं, right? And now एक जगह change किया हमने, we can just go and update it however many times you want. कोई भी array भेजो, that's fine, right? But all you had to do was change it once. ठीक, तो double it में I can send any array.
दैट्स टोटली फाइन, वो अपडेट होके आए. क्लियर? इसको आई हैव टू पास इट इन ब्रैकेट, मे क्विकली पास. ठीक ठीक, हम ब्रैकेट गलत यूज कर रहे थे. राइट, ऑल गुड, ऑल गुड टिल हियर. ओके, ठीक है. So now talking about this function a bit more, हमारे पास zero is not even or odd. Zero क्या होगा whenever you do a mod of zero with any number, right? वो क्या होगा? Zero, right? That's why that is in falling in category of. Take, चल. Moving forward quickly, functions के साथ we have some more technical statements, right? So if someone asks you, you should be aware about these technical statements. Basically functions को define करने के 2-3 तरीके होते हैं, right? One way of doing it is how we are doing it, जिस तरीके से कर रहे हैं, right? So that way is called function statement, right? उसका एक नाम है which is called function statement, right? Basically जब हम function name देते हैं and we define them, right? So function name and we define it like this. This is your function statement. ठीक, उसके बाद comes a function expression. Function expression, right? तो remember JavaScript के variable में कुछ भी store हो जाता है. We can even store functions, right? So what I'll do is I'll use var. I'll name my function. I'm just gonna give it a random name. ठीक, and इसको I can create it like this. So what I'll do is यहाँ पे function लिखूंगा. I'll write this. And I can just return, right? So now this function is created. इस function का नाम, जैसे usually this was the name will be the name of the variable, and we can simply call it. All I have to do is console dot log name my function, right? And उसको call भी करना पड़ेगा, right? So I'll just call this. So printing hello. ठीक, तो the difference between function statement and function expression, is it clear? ठीक, अगेन सिंटैक्टिकल डिफरेंस ही है. फंक्शनैलिटी में नो डिफरेंस, नो डिफरेंस. इसको भी कॉल करना पड़ रहा है, इसको भी करना है, इसमें भी रिटर्न स्टेटमेंट है. एवरीथिंग इज गोना बी सेम एक्सेप्ट फॉर सिंटैक्स, राइट? एक्सप्लेन वन मोर टाइम दिस फंक्शन स्टेटमेंट थिंग. ओके, सो बेसिकली लेट्स से कि इफ यू आर राइटिंग फंक्शन इन यूजुअल वे, right? इस तरीके से, तो we call that thing a function statement. But if you want to store that function in a variable, you can go with that, right? Now of course the question is कि जब दोनों की functionality same है, why do we need these things, right? It won't make sense for now, but it's there to skip hoisting. बाद में जब एक hoisting term आएगा ना, तब बताऊंगा. बेसिकली आगे चल के हम एक और टाइप का फंक्शन सीखेंगे जिनको बोलेंगे एरो फंक्शन, राइट? उस टाइम वी विल बी डीलिंग विद दिस थिंग, राइट? सो टर्म्स पता होते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अडैप्ट. क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, ऑलराइट. नाउ फाइनली अ स्मॉल थिंग अगेन, ये जो फंक्शन हमने ऐसे लिखा है ना, दिस स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, राइट? सो जब भी यू राइट अ फंक्शन बट डोंट गिव इट एनी नेम, right? इस function को I'm not giving any name. So this kind of function will be called anonymous function. I hope you guys know about anonymous का मतलब, right? Something which has no name. ठीक है? ठीक है? अच्छा. Now again guys, do you guys think कि अगर हमारे पास एक function है and let's say मैं इसको add call, we can just pass one parameter, or can we pass multiple? Have you guys tried it? किसी ने ट्राई किया है? मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, राइट? तो आई कैन पास ए, आई कैन पास बी, आई कैन पास str, एनीथिंग कैन बी पास्ड अप अंटिल वी आर सेंडिंग दैट, राइट? सो array add 1, 2 and let's say मैं लास्ट वाला पैरामीटर पास नहीं करता, राइट? सो इन हियर इफ आई गो एंड राइट console dot log a, राइट, आई विल बी प्रिंटिंग ए क्योंकि आई हैव पास्ड 1, राइट? कीप इन माइंड सीरियल नंबर फॉलो होता है, राइट? तो 1 सबसे पहले है, 1 बी गिवन असाइन वैल्यू टू ए. ठीक, इन हाइंडसाइट क्या हो रहा है, दीज थिंग्स आर बीन टेकन, तो इनको वेरिएबल के नाम की तरह रखा जा रहा है एंड दीज थिंग्स आर बीइंग गिवन द वैल्यूज. सो बेसिकली इन हाइंडसाइट क्या हो रहा है, ए इज बीइंग डिफाइंड, ए को वैल्यू मिला 1 का,
B is being defined, B को वैल्यू मिला 2 का, and str is also defined, बस वैल्यू है कोई यहाँ पे to provide str नहीं है, नहीं है। तो whenever something like this happens ना, जब हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं बट वी डोंट गिव इट अ वैल्यू, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वो अपनी तरफ से एक वैल्यू अटैच करता है, एक प्लेस होल्डर अटैच करता है, विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, right? So if I show you guys, if I just comment this piece of code, comment करना था, remove नहीं करना था. If I go and write a comma b, right, I'll be printing 1 and 2, but जैसे ही मैं str लिखूंगा ना, I'll be printing undefined. Clear है? Clear है? Yeah, it's a data type और undefined fall करता है कैटेगरी में primitive के. ठीक, तो it's something that is given by JavaScript itself runtime पे. ठीक, ठीक, ठीक. So tell me, जब हम ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट, एंड वी आर नॉट असाइनिंग इट एनी वैल्यू, राइट, लेट्स से मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ वैल्यू. ठीक, लाइन नंबर 99 पे टॉप डाउन अप्रोच याद रखना, लेट मी जस्ट कमेंट इट क्योंकि मुझे जानना है आप क्या सोचते हो. इफ आई गो एंड राइट this, if I uncomment this, what should I be printing? Undefined, undefined. So if I go and uncomment this, I'm printing Ritesh, right? Because what happens जब हम var use करते हैं ना, it's able to access the later value also, right? Because ये जो var keyword है ना, it's a global keyword, right? Global variable का keyword है. What does that means? Let me explain. So what happens? Let's say let's talk about it in diagram format. We have 2 rooms, right? 2 rooms है, and in this room we have like we have a flat, and उस flat में there are 2 rooms, right? This one, and finally we have a kitchen. ठीक, इसी तरीके से we have another flat, right? एक और flat है, but इसमें क्या है, kitchen एक room के अंदर, right? Let me take this thing. Kitchen जो है वो एक room के अंदर, right? So in flat number 1, will both of these rooms or both of these variable will be able to access the kitchen? Yes, but second condition में ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, right? Only one variable is able to access it. So इसी तरीके से analogy कुछ ऐसा ही होता है. We have a global and local type of variables, right? Where जो है वो global में form करता है, क्यों? Because it can be accessed anywhere, right? Right. So let's say we have a variable and मैंने उसको एक block of code में define किया, right? So if I write it something like this ना, I create a block of code, and इसके अंदर if I go and write name equals to Ritesh, and if I do yes, let's just put a number in here, right? So 40. So if I do a console.log name in here, अभी क्या होगा? I'll be printing that name. अगर मैं बाहर जाके भी print करूँ ना, इस ब्लॉक के बाहर जाके भी print करूँ, I'll be still able to access that, right? But there are few keywords like let, let's say इसके साथ I define name to, right? And इसको कुछ value देता हूँ. If I let's say if I try to access it outside, no, outside, am I able to access it? नहीं, एक error आ रहा है which says name to is not defined, right? So basically if we define variables with let keyword ना, हम उसको block के बाहर accept नहीं कर पाएंगे, right? So now I'll be able to only access it inside that block. ठीक, block में we are printing 15, but जैसे ही block के बाहर print कर रहे हैं, we are going for that, right? So let is basically a type of local variable जो कि अपने आप को block तक ही keep रहे. ठीक है, उसी तरीके से we have one more variable which is called const, right? One more keyword, my bad, for variable which is called const. Let's say we have name 3, right? And इसमें if I store 20, इसको भी you can't access it outside, right? So if I comment this one out, and if I go and write console.log name 3, you see, I'll not be able to access it, right? But then the question will be, जब
let and const are working exactly same. Why do we have const? So the reason is कि in long term जब हम websites बनाएंगे, will be needing some variables जिसको हमें update करना है. But there will be some variables which should not be updated, right? So let's say आप login ID बना रहे हो, ठीक. अब login ID में the username can get update. Username update हो सकता है, right? User can update their name. अगर वो settings पे जाके update करना चाहते हैं, we should give them property to update their name. But let's say कि एक user है, he is gonna have exactly one आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर. एक पर्सन के पास एक ही नंबर होगा, so they should not be able to edit it later. एक बार एक पैन कार्ड नंबर चला गया, that should not be updated, right? Right? So those kind of variable you will be define it in const, right? So let's say यहाँ पे जाके if I try to access name to, पहले मैं बाहर वाले variable comment out कर देता हूँ so that we don't have any errors, right? मैं इसको name to को if I give a value of 20, no, you guys will see it's getting updated with 20. But वहीं पे if I update name 3 with some value, right, 25, and if I try to do console करने से पहले ही we are getting error assignment to constant variable, right? So we're basically trying to reassign value to a constant variable and we are not able to do that. Clear? So the difference between var, let and const clear है? Clear है? Clear? ठीक है, ठीक है. var can be accessed before declaration. Yeah, but for now don't quote that statement जब तक मैं आपको होस्टिंग नहीं पढ़ा देता. That will be by next week. ठीक है, ठीक है, चलो चलो. So I hope the difference between these things are clear. ठीक ठीक. Now let's say कि अगर मैं let के साथ ये काम करने का ट्राई करता हूँ, तो अभी क्या होगा? Given that let is not a global variable ना, if I go and let me just comment these things out real quick. If I uncomment this, you'll see we are getting undefined. ठीक है, ठीक है. तो to prevent errors like that, is it better to use var or let? Better क्या है यूज करने के लिए? अच्छा, देखने में वैर आसान लग रहा है, बट गाइज हमें आसानी नहीं चाहिए. इन कंपाइल टाइम ना वी नीड एज मिनिमम एरर्स एज वी वांट, राइट? तो लेट इज मच मच बेटर टू यूज, राइट? एंड कॉन्स्ट तब यूज करोगे जब यू वांट टू प्रोवाइड अ वेरिएबल सम वैल्यू जो कि यू डोंट वांट टू अपडेट लेटर, राइट? एंड लेट मी गिव यू अ हिंट, वो वैल्यूज होने वाली है लाइक फंक्शंस, राइट? तो फंक्शंस में एक बार जब हमने फंक्शन बना दिया, डू वी हैव टू अपडेट दैट फंक्शन? नहीं, राइट? तो जब हम आगे चल के एरो फंक्शन सीखेंगे ना, वी विल बी यूजिंग फंक्शन स्टेटमेंट. तो फंक्शन को हम कॉन्स्ट वाले वेरिएबल में डालेंगे. क्लियर है? क्लियर है? सेंस बनाती है बात? सेंस बनाती है? ठीक, ऑल गुड. एनी डाउट सो फार? जल्दी बताओ, किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज गाइस, मुझे थोड़ा आपकी तरफ से भी रिस्पांस चाहिए. तो व्हाट आई एम गोना डू इज, आई एम गोना कॉन्स्ट नहीं समझ आया? ओके. सो बेसिकली लेट क्लियर है, लेट क्लियर है, लेट क्लियर है. सो कॉन्स्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लेट, बट लेट में क्या होता है? वी कैन रीअसाइन वैल्यूज लाइक वैर, राइट? सो वी हैव गिवन अ वेरिएबल अ वैल्यू ऑफ 15, उसको बाद में जाके हम 20 भी दे सकते हैं. बट कॉन्स्ट में दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट लीगल. ठीक, एक बार कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर. ठीक है. सो I'm gonna do like I'm gonna open Replit, right? And मैं एक कोड शेयर करने वाला हूँ. It's a fill up type of code. Let me just quickly log in real quick. Hmm, just give me a sec. ठीक है. So now in here, I'll use Node.js cube and I'll share the link with you guys, Replit का. ठीक. So basically I'll paste a code in here and वो code you guys have to solve.
right? It's not something very big. It's easy. All it is fill-ups, right? So ये रहा code. I'll just copy this link and I'll paste it in chat, right? इसको देखो और बताओ how can we fill the blanks, right? I've shared with everyone. Guys, let me know if you can access the link. You should be able to. ठीक, जब भी मैं इसको अपडेट करूंगा, all you have to do is refresh it real to. ठीक है, तो guys quickly try it. I'll give you guys 2 minutes. Let can be updated only in function, right? Not रोहिश, वो कवर ही नहीं किया मैंने, ठीक, उसके बारे में अभी चिंता मत करो. अभी जस्ट थिंक अबाउट ब्लॉक ऑफ कोड काइंड ऑफ थिंग. फंक्शन के साथ होल डिफरेंट थिंग. ठीक, str इक्वल्स टू, तो इसका ऑड कैसे निकालेंगे? ऑड इन व्हाट सेंस? स्ट्रिंग के लेंथ से ऑड निकालना है, ऑड इंडेक्स निकालने हैं, क्या करूं? प्रेजेंट ऑड इंडेक्स वाले एलिमेंट्स निकालने हैं. हाउ टू एडिट? यू डोंट हैव टू एडिट. उसको कॉपी करो, अपने जगह पे पेस्ट करो एंड वहां पे जस्ट फिल दीज ब्लैंक्स अप, दैट्स ऑल. हाँ, यू वोंट बी एबल टू एडिट, नहीं तो फिर सबको एडिट कर लेगा, राइट? और इफ यू आर लॉग्ड इन, यू कैन फोर्क इट, बट जस्ट उसको कॉपी करो, पेस्ट इट इन योर VS कोड और एनीवेयर एंड जस्ट अपडेट इट एंड पेस्ट इट इन चैट और सेंड द लिंक अगेन. या श्योर. इंडेक्स पे सो देखो फैजन, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, राइट? स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है. तो टू डू म्यूटेशन काइंड ऑफ थिंग ना, आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल टेक अ न्यू स्ट्रिंग एंड उस स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन करोगे, राइट? तो आप क्या कर रहे हो गाइस? फर्स्ट सॉल्व दिस, देन विल टेक फैजन का डाउट. ठीक, फैजन जस्ट थोड़ा देर वेट करो यार, ये सॉल्व भी कर लो. ठीक, बिकॉज वी हैव टू टेल दैट टू एवरीवन, राइट? सबको पता होना चाहिए. चलो, इट्स अ गुड डाउट एक्चुअली. नाइस. तो गाइस 2 मिनट पूरे होने वाले हैं, 1 मिनट में. एवरीवन क्विकली. That we have to add all the numbers, but in loop part there is one if condition which says add only even number. Yeah, so sum of all integers, let me remove this. Sum of all नहीं, even integers. ठीक, तो ये रहा add the even numbers only. यहाँ पे you have to put that. ठीक, तो Aritra correct, exactly correct. Abin correct. Pawan correct, well done. Sheikh correct. Satyam correct. हाँ, by example usage, just think of this way, right? इस तरीके से सोचो कि basically you have to sum your even numbers. That's all. ठीक, सागर correct, ऋषिकेश correct, संतोष correct. ठीक है, तो I can see many of you guys have done it. So all we have to do is first thing first, पहला जो condition जो fulfill करना है, which is to run the loop from zero, right? Zero से लेके हमें given number तक run करना है. तो to do that, what we can do is we can now start using let. तो let I equals to 0, right? Right? वो number 0 से start करना है and then we have to go till the number. तो I should be less than or equals to number तक जाना है, right? We have to go till 5. 5 को भी include करना है, right? तो 0 नहीं, from 0 तो that doesn't make sense. 0 add होगा तो it won't make any difference. तो you can start with 0 or 1, that's fine, right? क्योंकि 0 add भी करोगे तो it won't make any difference. Clear? ठीक है. And finally हमें क्या करना है? I plus plus करना. ठीक, then the condition comes कि सिर्फ even number का sum करना है. So what I'll do is I'll check if my I is divisible by 2 or not. If it is, मैं क्या करूंगा? मैं एक sum variable ले लूंगा and उसमें I'll keep on adding, right? And finally जब entire loop add कर दिया, I'll just return it. Clear? Then I is index. Index तभी सोचोगे when you have array and string. For now, do we have any array or string or we just have numbers? So you don't think in terms of index for this. Clear?
ठीक चल so with that let's move toward next set of things which is basically objects right तो objects के बारे में बात करेंगे before that let me try to tell you guys recall कर पाते हो कि नहीं किस में आता था primitive या नॉन primitive में object primitive में आता है कि नॉन primitive नॉन primitive तो what are we expecting objects में जो भी store होगा can be updated ठीक तो गाइस जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर था ना इट वाज अ स्ट्रक्चर इन विच वी कैन स्टोर डेटा उसी तरीके से वी हैव ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज अ डेटा स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर डेटा इनसाइड दैट ठीक now the syntax for object is gonna be like this let obj again name can be anything variable है जैसे array को we defined with square brackets ना object को will define with brackets and इस ऑब्जेक्ट के अंदर वी आर गोना स्टोर थिंग्स इन की वैल्यू फैशन राइट तो रिमेंबर HTML में एट्रीब्यूट्स सेव करते थे हम लोग एट्रीब्यूट्स रखते थे राइट तो कैसे एट्रीब्यूट हैड अ नेम एंड उसके बाद वी वर गिविंग इट सम वैल्यू इस ये फॉर्मेट फॉलो होता था उसी तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स ना वी आर गोना हैव सेम थिंग बट थोड़ा सा डिफरेंस है लेट्स से आई हैव अ नेम आई स्टोर इट विद अ सेमीकोलन right इसके अंदर let's say I store a value right let's say if I write Virat take then I can go and write another thing let's say last name right so I can go and add Kohli take let's say if I want to add another data type so what I can do I can add number of matches and इसमें जाके I can just store number of matches right so let's say if I write something like this ठीक just like dictionary in Python correct just like dictionary in Python just like hash mapping Java and all तो उसी तरीके से we have objects which store things in key value fashions now एक छोटे से टिप देता हूँ these names are gonna be unique right तो keys in object are gonna be unique right so if you have what is of match it is basically number of matches right variable का नाम दिया और कुछ नहीं ठीक just trying to be creative that's कुछ नया नहीं वेरिएबल का नाम ठीक और वो वेरिएबल की है ठीक है सो हाउ वी कैन एक्सेस दीज थिंग्स जैसे हम एरे में करते थे वी वर गोइंग एंड राइटिंग एरे एंड वी वर राइटिंग इंडेक्स rather than doing that ऑब्जेक्ट में क्या होता है कॉमा क्यों यूज किया बिकॉज दैट्स द सिंटैक्स राइट एक की वैल्यू पेयर ऐड किया उसके बाद यू हैव टू ऐड अ कॉमा उसके बाद एक की वैल्यू पेयर ऐड किया उसके बाद यू हैव टू ऐड अ कॉमा उसके बाद फिर एक ठीक in here what you will do is you will use a square bracket and उसके अंदर you will write the name of this key right key का नाम लिखोगे so what I'll do is I'll write a string and उसके अंदर I'll write the name of the key so am I getting Virat am I getting the value right so guys keep this small thing in mind ये होता है square notation right so let's say SQ में store करता हूँ this thing is basically called your square notation क्योंकि हम use कर रहे हैं square brackets का right can we write it without quotations no let me just print it quickly SQ so it's gonna get undefined right तो quotations के बिना use नहीं करना you have to use it with quotations right and there is another way which is called dot notation basically उसमें क्या करते हैं we just write the name of object dot that right isme you don't have to use quotations see you can just directly write it so if I do console dot log obj just write dot see we'll be able to access this right so let's say if I want to access number of matches how can I do it everyone write it in dot notation first and then square notation इस तरीके से लिखो can we use index number also no पहले स्क्वायर नोटेशन में लिखो फिर डॉट नोटेशन में ठीक दोनों में डिफरेंस क्या है अपीयरेंस में डिफरेंस है एंड देयर इज वन मोर स्मॉल डिफरेंस जब मैं लूप चलाऊंगा ऑब्जेक्ट में तब बताऊंगा right when I'll cover loops in object I'll tell you guys what's a big difference between these two things ठीक break of course I'll give you guys just tell me कि how can you access number of matches and dot notation and square notation दोनों उसके बाद that will be I'll give you guys break ठीक all right well done I can see all of you guys can do
ठीक है, चलो. सो गाइस, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक. उसके बाद विल सी कि हाउ वी कैन म्यूटेट आवर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल. फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, लूप्स वगैरह कैसे चलाएंगे आराम से. राइट, सो टेक अ ब्रेक ऑफ 3 minutes. एवरीवन बी बैक बाय 11. ठीक. ठीक. या. ठीक है. इज एवरीवन बैक? पी लिया पानी एवरीवन? गाइस सब आ गए? यस, नो? ठीक है. ठीक है. सो या फैजन, आपने डाउट पूछा था ना स्ट्रिंग वाला, यार वो थोड़ी देर में कवर करूंगा व्हेन आई विल टेल यू अबाउट फंक्शंस अगेन. ठीक, तो थोड़ा सा और वेट करो. सर ऑब्जेक्ट कब यूज होता है? व्हेन यू हैव टू स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा. सो बेसिकली लेट्स से कि वी हैव टू डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? एक है एरे एंड एक है ऑब्जेक्ट, राइट? अब लेट्स से कि एरे की बात करता हूं मैं. तो इन एरे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टोर थिंग्स इन लीनियर फॉर्मेट. लीनियर फॉर्मेट मतलब लेट्स से आई एम स्टोरिंग वन, आई एम स्टोरिंग टू, आई एम स्टोरिंग थ्री फोर एंड ऑल, राइट? और लेट्स से कि मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ. तो लेट्स से आई एम स्टोरिंग नेम वन, नेम टू, नेम थ्री एंड, राइट? बट ये क्या है ना, इट्स नॉट स्केलेबल. स्केलेबल का मतलब बेसिकली लेट्स से इफ आई वांट टू स्टोर डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, राइट? तो मेरे पास एक सिस्टम है, लर्निंग LMS है, राइट? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. इन दैट आई वांट टू शो डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ठीक, एडमिन है, एडमिन इज एबल टू सी डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट. So rather than showing name, we should be sharing each and every detail about that student or not. पूरा डिटेल जाएगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट का पूरा डिटेल जाएगा. सो in that sense where we have to give more description about a single thing, what do you guys think, which is better, array या object? Array or object? Object. Object
let me pose one more question. एक और छोटा सा क्वेश्चन पोज करता हूँ. In array, we are able to store multiple different things, but can we store multiple different things in object? कहने का मतलब I can store information or at least name of multiple students, but object में can I do that? I can create object for one student only, right? तो usually you guys will see कि array and object ना साथ में use होते हैं. So basically later what we are gonna do is we're gonna create array of object, right? So let's say हमारे पास student detail नाम का एक array है, right? In this array हम क्या करने वाले हैं? We're gonna store a object. Object के पास name होगा, right? Stud1, right? And उसका ID होगा, तो let's say 1. इसी तरीके से we are gonna have multiple of these things, right? तो student 2 और इसका ID 2. So can you see कि how we are mixing two different data structures and creating a more scalable way of storing data? है ना? तो इस तरीके से चीजें यूज होंगी. ठीक, I hope that makes sense. ठीक ठीक, चलो back in here. अभी क्या करना है? What we were talking about basically, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं ये तो पता चल गया. वी ऑलरेडी नो अबाउट एरे एंड ऑल. हाउ कैन वी अपडेट अ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कैसे करेंगे? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस नो, लेट्स से आई हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड इसके ऊपर की आई विल जस्ट कमेंट एवरीथिंग. ठीक, सो लेट्स से इफ आई हैव दिस ऑब्जेक्ट and given that object is non-primitive data type, so it's mutable, mutate हो सकता है. So all you have to do is you have to access the key, right? So let's say if I write obj.name and उसके बाद you can just assign the new value, right? Reassign कर दो, that's fine. So now if I go in here and if I write Masai, if I go and do console.log object now, na, you'll see कि now the name has been updated with Masai, right? But what if we are trying to update a key which is not present in that object at all, right? So let's say कि मैं बोल रहा हूँ object dot locations and or rather locations played and मैं एक array लिख रहा हूँ, right? So let's say Wankhede and let's say Eden Garden, ठीक, ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ. And is this key available in this object? है क्या available? नहीं है, नहीं है. So if I try to uncomment this, error आने वाला है. No, तो basically क्या होता है? If that key is not present ना, वो object में जाके add कर देगा, right? So have we added location plate? Have we added location plate? ठीक है. अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है. How can I print Wankhede? I have to just print Wankhede और कुछ नहीं print करना. Only that. कैसे करेंगे? Access using index. तो first we have to access this key, right? तो मैं क्या करूंगा? I'll go and write console.log obj.location plate. तो पहले तो मैं key access करूंगा. Now am I getting the array? Right? अब इस array में ये जो overall value हमें array दे रही है, I'll go and apply index. So I'll write 0 and there you go. You can access it. Right? So you can store multiple things in this way. That's totally fine. डॉट जीरो नहीं करेंगे सूरज, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एरे है, राइट? एरे में डॉट नोटेशन यूज नहीं होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट में यूज होता है, राइट? ये चीज एरे है. तो अब इसके अंदर फॉर एक्सेसिंग थिंग्स यू हैव टू गो फॉर 0. ठीक, all right. So that's basically how you can update your array or add new key value pairs to it. But let's say कि मैंने इस object में मैंने क्या किया? I'm again defining a name, right? ये. So as I told you guys, जो name है और जो key है, they are gonna be unique. Is the key being unique in this object? नहीं, नहीं. So if I remove this updation, क्या print होने वाला है? The later one, right? So rather than going for I don't want to do this, I'll do console.log obj and let's go for square notation here. I'm gonna access the latest one,
क्लियर है? क्लियर है? तो एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस ना? जैसे HTML में भी होता था, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा, पर यहाँ पे कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, थिंग्स आर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओनली, ओनली। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव सेम नेम के की, क्योंकि वो ओवरराइट हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, डॉट नोटेशन यूज करो, स्क्वायर नोटेशन यूज करो। यू आर नाउ अपडेटेड, डॉट नोटेशन यूज करो, स्क्वायर नोटेशन यूज करो, दैट्स टोटली फाइन। यू यूजुअली सी की डॉट नोटेशन ही यूज होता है अप अंटिल हमारे पास एरे आता है, राइट? तो वो लूप चलाने की क्या बात है, लेट्स ट्राई टू कवर दैट आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ब्लॉक कोड के बाहर अपडेट कैसे करें? नॉट श्योर व्हाट आई आस्किंग, बट ठीक है। let's say I have a new object, right? an object में इसको बोलता हूँ, and in this I have a जिसको वैल्यू दे रखी है मैंने 1, I have b जिसको वैल्यू दे रखी है मैंने 2, I have c जिसको वैल्यू दे रखी है मैंने 3, and I have d जिसको वैल्यू दे रखी है मैंने 4. Now what I want to do is I want to run a loop over this n object, and मैं सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करना चाहूँ, राइट? सो डू वी हैव इंडेक्स सिस्टम इन ऑब्जेक्ट? इंडेक्स का सिस्टम है? नहीं, नहीं, वी जस्ट डिस्कस कि ऑब्जेक्ट में अरेज एंड स्ट्रिंग्स की तरह इंडेक्स का सिस्टम नहीं है. सो कैन वी रन अ नॉर्मल फॉर लूप ऑन इट और मे बी व्हाइल लूप? नहीं. तो फॉर ऑब्जेक्ट्स वी हैव अ स्पेशल लूप व्हिच इज कॉल्ड फॉर इन लूप, राइट? सो बेसिकली सिंटैक्स कैसे जाता है, वी राइट अ फॉर लूप, वी क्रिएट अ ब्रैकेट, वी क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कोड. कंडीशन क्या होती है, वी फर्स्ट राइट और डिफाइन द की, राइट? सो मैं क्या बोलूंगा, लेट या where की इन विच ऑब्जेक्ट. सो आई वॉन्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो अभी क्या हुआ, आई एम डिफाइनिंग कि गोइंग फॉरवर्ड कीज जो है उनको मैं डिफाइन करूंगा विथ KEY इन द ऑब्जेक्ट विच इज इन ऑब्जेक्ट, right? So let's quickly see, if I go and write console.log key in it, what am I printing? Guys, क्या print कर रहा हूँ? The keys, सारी की सारी keys print कर रहा हूँ, ठीक? If I go and change this name can be anything, key ही नहीं है, it can be anything, right? So let's say इसको जाके मैं any कर देता हूँ. So if I update this with any, you'll see I'm still printing, right? But एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आता है, पहले तो ये बताओ, key है, right? We have key, we have object. Let's say if I want to print all of the values, how can I do that? सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करनी, राइट? की डॉट वैल्यू इजी है, इजी है, एज इजी एज इट साउंड्स. क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग की लिखेंगे, उसके अंदर एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड उसके अंदर डॉट एनी लिख देंगे, राइट? मिल गए सारे ऑब्जेक्ट? मिल गए क्या? नहीं मिले? नहीं मिले, राइट? तो एक छोटी सी चीज होती है बेसिकली, जो आपका स्क्वायर नोटेशन होता है ना, इट हैज समथिंग, a डायनेमिक टर्म विच इज कॉल्ड डायनेमिक की एक्सेस, राइट? जो कि डॉट नोटेशन के साथ नहीं होता है. क्यों? डॉट नोटेशन इज वेरी स्पेसिफिक, right? What dot notation will do, it won't be dynamic, it will search in this n object and it will check for exact key which has a name of any, right? So it's going to search for exact key which has name of any. Do we have any key which has name any, A and Y? No, no. Let's say if I define a any key, right? So you'll see 5 times over it's printing that any wala key. But in case we don't have that key, JavaScript is assigning it a by default value which is undefined, right? So by default वो undefined value दे रहा है because it says we don't have any in here. So in loops na, going forward, you're gonna use bracket notation, right? And in this bracket you will be using like this, right? So loops के अंदर you don't have to write square notation in any because in hindsight क्या हो रहा है, the n object has a value of any, right? And this any has the value of each and every key based on कौन सा iteration चल रहा है.
तो फर्स्ट इटरेशन में any will have the value of a but it will be in string format, right? तो एक बार the value is in string format, do I have to make this thing a string again? No, no, because अगर हम इसको string बना देंगे the variable will not be able to access, right? So we don't have to write string in here. Clear? Clear? Everyone? कोई है जिसको बाउंसर गया ये चीज? Please repeat. Sure, sure. So we have object and उसके अंदर we have multiple keys. Now what I want to do is I want to run a loop on it. I want to print each and every keys inside that object, right? So given that object does not has any index system, right? Repeat ही कर रहा हूँ भाई लोग, repeat ही कर रहा हूँ, ठीक? तो ऑब्जेक्ट के पास कोई इंडेक्स सिस्टम नहीं है, so rather than going for index we have to go for any other for loop which is basically for in loop, right? In this for in loop first we define the name of key. So let's say I'm defining it as any, you can define it with any keyword, right? तो कोई भी keyword use कर सकते हैं, and finally we'll point ki which object I want to run this loop on. Right now, rather than using dot notation in it, we use bracket notation Q because square notation has dynamic key access. It can be dynamic, whereas dot notation won't be dynamic. It will search for exact keyword name, right? And finally, you can just print it. Clear है? Clear है? ठीक guys, dot notation क्यों नहीं यूज हो रहा है? सबको क्लियर है? Is there anyone who has any doubts in this? Because object में this is a very good question to ask. If you want to print index number in object, नहीं है ना, index concept ही नहीं है, तो क्यों print करोगे? ठीक, everyone all good? सब present है? Everyone type 1 in chat irrespective of doubt है कि नहीं है? सब कोई? Okay, ठीक, ठीक, that's good. चलो, so now that this is fine, ये हो जाएगा, everyone can do this, loop चलाना object में, right? So if I ask you guys, print key and value together, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? Right? All I have to do is I'll write any comma n object, right? तो अभी I'll be printing key and value, ठीक? मान लो साथ में कुछ और लगाना है तो I'll add a concatenation, right? तो let's say मुझे ये भी लगाना, there you go, right? Let's say if I just wanna print वो वाले key value pairs which has even values, कैसे करेंगे? Which just has even values. तो जस्ट टेक दिस एंटायर थिंग, इसको पुट कर दो इफ एल्स ब्लॉक में. सो इफ ये रहा, इफ आवर एन ऑब्जेक्ट के अंदर का वैल्यू is divisible by 2, if this thing is true, then only run this code, right? So key is not defined because we have named it any name कर देते, ठीक? तो is that working? All good? तो सारी conditions whichever you are applying in your usual for loops and all, you can apply it here, no change. Clear है? ठीक, चलो, let's move forward quickly. We have to learn about one more easy topic, which is basically methods, right? So let's say I have an object and in this object I have let's say let के बाद any है वो पर key रहेगा क्या? Yeah, this any will be used as key, ठीक? You can name it anything, इसलिए मैंने directly उसको any कर, ठीक? Rishikesh, you don't have to think about it. That thing is being taken care in runtime. ठीक है? ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिफाइन ही किया गया है कि यू कैन डू दैट, डील विद दोस थिंग्स, ठीक है? चलो, नाउ in object, let's say I have first name, right? And let's say this is that again, and I have last name, right? And this is for in objects we just not have to store these things, हम functions को भी store कर सकते हैं in variables. Is that something that is fine? Functions को store करना in variable. Remember क्या बोलते थे उसको? Was it called function expression या function statement? दोनों में से एक पिक करो.
EXP या STAT, एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट। ओके, बड़ी जल्दी भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए। ये लो फर्क देख के बताओ। अब तो यार, अब तो सारे एक जैसा बोलो। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। take so in here you can write function expression, right? So let's say मुझे एक मेथड चाहिए, it's called greet, right? greet, तो मैं उसका नाम लिखूंगा and in here I'll write function, ठीक? and in here I can write console.log hi everyone, ठीक है? तो this is how I can store a function. Is this a function state expression? example है function expression का, right? तो क्योंकि in object we have to store things in key value format rather than going for function statement ना, we can store functions in this format, right? and जब भी we store functions as a key of an object we call these function methods. क्या बोलते हैं? इन function का नाम change हो जाता है, they are being called methods now, right? so I will write it in here, functions which are keys of object, they are called methods, ठीक? methods बोलते हैं. Now a very good question, how can we call it? आप लोग बताओ कैसे कॉल करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा. पहले तो बताओ, how can I access this greet? कैसे एक्सेस करूंगा? obj.greet, does that sounds fine? fine fine fine, ठीक है. की को एक्सेस कर लिया. Now given that this key is a function, should I call it? should I call it, right? तो वही करूंगा, मैं उसको कॉल करूँ. Am I printing that? Hi everyone. Right? Right? अच्छा. Now let's say I want to print hi everyone myself, Virat Kohli. क्या करूंगा? I'll write a comma. Right? Let me just comment this out. Take spoiler alert ना हो जाए. Let's just put it there. Let's write first name and let's write last. Take. This should do. This should do. Line number 125 को if I uncommented, that should do. Fine. Fine. ठीक है. So let's say if I go and try to access it, what am I getting? First name is not defined. ठीक, ठीक. तो this thing has to deal with the environment or block or scope of a function. अब देखो गाइस, जो फंक्शन का स्कोप होता है ना, इट एक्ट्स अ बिट डिफरेंट. डिफरेंट कैसे काम करता है? इट रेफर्स डायरेक्टली टू द ग्लोबल स्कोप, राइट? तो ग्लोबल स्कोप में, नॉट इन ऑब्जेक्ट, ग्लोबल स्कोप में डू वी हैव अ वेरिएबल विच इज नेम्ड एज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम? है क्या? डू वी हैव एनी वेरिएबल? कोई वेरिएबल है जिसका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम? नो. लेट्स से इफ आई गो एंड डिफाइन इट, राइट, where first name and it's defined Rohit, and let last name and it's defined as Sharma. Am I printing it? Am I printing it? Right? So जो function का scope होता है ना, it's by default your global scope. To push it, to show it कि हाँ हमें object का scope use करना है, we attach a small keyword which is called this. Right? So basically, अगर मैं इस function में if I go and do console.log of this, what am I printing? What am I printing? Am I printing that entire object? ये वाला object ही print कर रहा हूँ, right? So basically, by using this keyword, ना, we are able to access this entire object inside methods. And if I do this dot first name, will I be accessing सिर्फ object वाला keyword? Yes, yes. So what I'll do is I'll go and write this dot first name and this dot last name. Clear है? Clear है? How the this keyword works, right? So this will be basically your parent object, right? Parent object को access करेगा, and if you want to access parent object का key value pair, you will be accessing it by writing this dot that key का name. Clear it? So again, let me quickly repeat again. Let's say if you are trying to access some variables, right? So देखो, I've defined first name and last name in global scope, and I've defined first name and last name in object का scope.
right? So if I go and write console.log first name and last name ना, you guys will notice कि वो global scope वाला first name and last name access कर रहा है, right? So to make it access object का scope, we have to apply this. That's all. So इसमें क्या करेंगे हम this dot लगा देंगे and इसमें भी this dot लगा देंगे. Right? Why this? Because this क्या करता है? It refers to this object, right? So if I hover over it, it's referring to this entire same object. Clear? Clear? Key is double equals to variable. Smith, in long run, yeah. Long run में yes. Yes. ठीक, but क्यों long run बोला? क्योंकि वो सब समझाने के लिए ना I have to tell you guys about something which is called execution context. अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीक बताऊंगा एक्चुअली. दिस समझ नहीं आया यार? देखो दिस कुछ नहीं करता है. ऑल इट डज इट पॉइंट्स टुवर्ड दिस ऑब्जेक्ट, राइट? एक पॉइंटर बना देता है ऑब्जेक्ट की तरफ. तो ये सी मैंने यहाँ पे console.log दिस लिख रखा है, तो आई एम एक्सेसिंग दिस ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ मैंने फर्स्ट नेम वेरिएबल डिफाइन किया ऑब्जेक्ट में भी एंड फर्स्ट नेम वेरिएबल डिफाइन किया ऑब्जेक्ट के बाहर. सो इफ आई ट्राई टू एक्सेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक्सेस करने का ट्राई करूँ ना, तो विल सी कि आई विल बी एक्सेसिंग ग्लोबल वाला वेरिएबल. ठीक, दैट्स एग्जैक्टली हाउ फंक्शन का स्कोप काम करता है. इट डायरेक्टली रेफर्स टू ग्लोबल स्कोप. ठीक, इफ यू वांट टू यूज स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट, आप क्या करोगे? यू विल ऐड दिस बिफोर योर की. ओके, this is only used in object or anyway in sense of object only, yes. With respect to object, yes. Take, if I remove console.log this, that's fine, it's totally fine. It works, it works. You look, desktop first name and desktop password, that works. Clear है? Methods clear है? So just like that we can add multiple methods. That's totally fine. Let's say मुझे एक और method add करना है which basically says फैजन वाला क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं. Let's say new str एक फंक्शन बनाता हूँ, राइट? फैजन ध्यान देना है यहाँ पे. So let's say यहाँ पे if I create a function, right? What I want to do in this function is basically only print even position वाले elements in first name, right? So in first name I want to print only even index वाले elements, right? So how can I do that? How can I do that? Let global scope है ना अभी acting as local, तो let is defined in global scope, right? तो let को we can access it in here. ठीक, अगर कोई चीज ग्लोबल में ऑलरेडी डिफाइन है तो वी कैन एक्सेस इट इन हियर. बट लेट्स से कि मैं उसको फंक्शन में डिफाइन कर दूं, तो यू वोंट बी एबल टू एक्सेस इट आउटसाइड ऑफ दैट. ठीक है, अगर वो ऑलरेडी पहले ही ग्लोबल में डिफाइन हो गए तो वी कैन एक्सेस इट एनी. ठीक, तो पहले तो ये बताओ, हाउ कैन आई एक्सेस द फर्स्ट नेम ऑफ दिस विराट? दिस डॉट फर्स्ट नेम, this dot first name. So let's say I'm storing a variable, let name equals to this dot first name. So this will be accessing this Virat, right? Error इसलिए आ रहा है because we haven't applied comma लगा. ठीक, now अभी क्या करना है? थोड़ा सा अपडेट कर दो फैजन तुम्हारा क्वेश्चन. What I want to do is in even positions now I want to add hash, right? So basically even positions पे we have Virat, right? So finally what I want is Virat की जगह I want hash I hash a hash, something like this. So given that strings are immutable, directly कर सकते हैं क्या? Let's say if I do for let I equals to 0, I is less than name dot length and I plus plus, and if I do name I equals to hash, so will I be updating string like this? Can I do that? Is it this thing possible? नहीं है, right? Because strings are immutable. Strings जो है वो immutable है. This thing won't be possible. So to do or achieve something like that ना, आपको क्या करना पड़ेगा? You have to create one more variable
and in that you'll store an empty string, right? अब इसके अंदर what we have to do is only print even, basically only print नहीं, let's update it, add hash at even position वाले elements, right? So what I'll do is I'll be basically accessing if our name index check कर रहे, right? तो I divisible by 2 is equals to 0. So basically we'll be accessing even वाले index. When that happens, no, what I'll do, I'll take the string और उसमें concatenation करूंगा. I'll do concatenation. Remember concatenation? str1 plus str2 will lead to दोनों का addition. So what I'll do is I'll pick this str and I'll do यहाँ पे stri, right? So नहीं, my right. In here, we जब भी even है, we have to attach a hash, right? So I'll put a hash, and when it's not even नहीं है, so what I'll do is in that condition I'll directly throw the str. Take stri, I have to do name, right? Does this thing make sense? What I'm doing is if I is even, I'm concatenating hash in my empty string, but if I is not even, else condition is being true, मैं वो string की value add कर रहा हूँ. So finally, once this for loop is done, what I'll do is I'll return my str. Check. So how can I run this new str? I'll just do object.new str and I'll call this. Can anyone tell me why am I not printing it? Because I'm writing a return statement rather than console statement, right? So इसको मुझे print भी करना पड़ेगा. I'm gonna take this entire thing and I'm gonna do a console.log, right? तो अभी update हो गया string. Is it updated now? But हमें एक new string का सहारा लेना पड़. Clear? Clear? I hope this clears your doubt, Faizan. Right? Clear हो गया? Okay. Not sure if he's present, but ठीक है. nahi, like you can access your even element here, right? So if you just want to print even wale elements rather than adding a hash, just run this thing. तो अभी odd वाले elements ही print होंगे, right? अभी even condition true ही नहीं हो रही है कभी, so we are going in odd condition and we are just attaching that. Clear? Clear? ठीक. So chalo, now let's move toward a small problem for you guys only. Let me just comment this one out and let me get the question. Before that, थोड़ी सी और बातें करते हैं. So basically, before we go for methods inside strings and arrays, right? So strings और arrays दोनों में method होने वाले हैं, आगे चल के देखेंगे अभी थोड़े दिन, right? So basically, one thing, keep it in mind, everything in JS is gonna be object fundamental, right? So ये statement you are gonna hear it a lot, or you might have heard it. सुना है, right? So everything in JavaScript fundamentally object होता है, right? थोड़ा सा ambiguous है. Rather than saying that, I'll say everything in JS is wrapped inside an object, right? So fundamental level पे ना, everything in JavaScript is wrapped inside an object, be it string, be it number or anything, right? In a lecture which will be containing something that is called constructor function, I'll explain more about it. अभी के लिए just keep this thing in mind, right? कि everything is wrapped inside an object. That's why क्या होता है, we can use methods in strings and objects also, strings and arrays also, right? What do I mean by that? Let's say I have a string, right? And this thing has Virat. Now what I have to do is I have to capitalize each and every string का element, right? So basically finally मुझे output क्या चाहिए? I wanted something like this, right? So for now
वी नो कि स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल, तो हम क्या करेंगे, विल बी टेकिंग अनदर स्ट्रिंग एंड उसके अंदर जब भी वी आर एनकाउंटरिंग अ स्मॉल केस लेटर विल बी अपडेटिंग इट विद अपर केस, राइट? इफ यू हैव सॉल्व्ड असाइनमेंट, मे बी यू हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम लाइक दिस. Rather than doing that, JavaScript has some inbuilt methods for strings, right? So for updating something in uppercase, what you can do is you can just go and let's say nstr, and in here what you'll do, str dot to uppercase, right? Now if I go and do console dot log nstr, am I printing that thing in uppercase or am I printing a function directly? Function print हो रहा है. Why so? Method है, should we call it? Method है, should we call it? Right? So of course, it's a method, we should be calling it. So am I updating the small case Virat into capital each and every element? Right? So strings has some methods like this. उसी तरीके से अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, लेट्स से str2 equals to holy, right? If you have to convert it into smaller case, you have two lower case, right? So str2 equals to str2 dot to lower case. Again, I'll call it, and again after a comma, I'll just convert हो गया, convert हो गया. राइट? उसी तरीके से देयर आर मल्टीपल मेथड्स, सम ऑफ देम आई हैव मेंशन्ड इन नोट्स. बाकी कैसे चेक करोगे, कहाँ पे चेक करोगे? MDN पे, राइट? तो guys, go and check about string methods on MDN. There are multiple, right? Multiple methods है. You don't have to remember each and everything, but you have to at least know, पता होना चाहिए कि what methods are there, so that जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, when you guys need it, you can just open MDN and you can access it. Clear है? Clear है? ठीक. So I'll showcase one small thing also. It's actually a very good one. Basically, let's say I have a sentence, right? Sentence, and it has a quick brown box. ठीक. अभी मुझे क्या करना है? I have to take this thing and मुझे क्या करना है? I have to update this brown, right? So before that, let's go for how can I convert this string into an array, right? तो अगर string को array में convert करना है ना, we have a string method which is called split, right? So what I'll do is I'll use an array and इसके अंदर I'll access my sentence वाला variable and I'll write sentence dot split. इसके अंदर I'll pass a oh, again give me a second, someone's at door. एक second दो. हाँ, ठीक है. सो स्प्लिट के अंदर अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड अ कंडीशन कि हम how do we want to split this? What do I mean by how do I want to split this? Finally, this entire thing is going to be converted in an array. Now, what do you want to take a reference to divide it? देखो अभी, let's say if I pass a string with a space in it, so what's going to happen? This entire string will be accessed and वो check करेगा कि where are the spaces. So we have space here, we have space here, we have space here. What's going to happen? This thing is going to be converted in an array with those spaces as a reference. तो इस तरीके का कुछ हमें मिलने में, right? So let's say if I go in here and if I write console.log n array, you guys will see कि I'm dividing it based on that, right? But let's say I'm attaching, let me just comment these two out. I'm attaching hash, right? तो यहाँ पे I have attached a hash, यहाँ पे I have attached a hash, यहाँ पे I have attached a hash, right? So now if I update this statement with hash, what's gonna happen? What's gonna happen? Now it will be splitted based on this hash, right? So this thing is gonna be one element. यहाँ से लेके यहाँ is gonna be one element, and यहाँ से लेके यहाँ is gonna be one element, right? So if I uncomment it,
See, as we expected, right? Right? ठीक है, ठीक है. Now let's say कि मैं space देता ही नहीं, right? If I don't give it any space at all, right? So if I don't give it any space, now what it's gonna do? It's gonna take each and every element and make it an array, right? So now there you go. हर एक एलिमेंट को अपडेट कर. Clear? Makes sense or not? ठीक है, ठीक है. Now let's say I have a string again. Let str equals to a, b, c, d, and e. Take. Now what I want to do is I want to convert this thing into array. Take. So what I'll do, let n array equals to str dot split with a space. Right now, given that this thing is converted into an array, क्या ये mutable है? Can I mutate this thing? Yes, yes. So if I want to update my C with a F, I can do that. I'll access n array, C wala second, and I will update it with a F. Right? String F, of course. String F, is it getting updated? And let's say I want to again convert it back to a string. What I'll do is once I've updated it, I'll pick n array and I'll update it to join. Right? तो अगर array को string में convert करना है, you're gonna write join. ठीक? तो मैं converting it back to a string. Converting it back to a string, right? Now there's a small thing. Let's say कि आपको ये string original format में चाहिए था with a space. You're gonna pass some arguments in it. I'll leave that for you to do a homework on that. ये छोटी सी चीज homework करना, आराम से go through MDN and find that out. Clear? Yes, Prashant. Correct. But let everyone do that. ठीक है, guys, try it. It's very good thing to do. ठीक है, उसी तरीके से we have some methods in arrays also, right? एक तो हमने देख लिया. Let's join. Again, let's say I have an array, right? And in this array I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 and 7, right? Now let's say if I want to remove the last element from it, right? So what I can do is I can just write array dot pop. Take. What this is gonna do is this is gonna remove the last element from array. So if I do console dot log array, am I removing the last element? Last element क्या करना है? Once more, I've shown you कि how you can use join. Join को थोड़ा explore करना है. ठीक है? All right. ठीक है, तो pop is basically removing the last element from array. Let's say I want to add something in array, right? Array के last में मुझे कुछ add करना है. What I'll do is I'll do array dot push, right? And in here, let's say I'm pushing hi. So I'm adding hi, right? Hi add हो रहा है, hi add हो रहा है. ठीक है, ठीक है. So I'm gonna write a few statement. You guys tell me final जो array होने वाला है वो क्या होने वाला है, right? तो pop, pop. चल, if I do console dot log of array, what am I gonna print? Can show joy one time. Shubham, I'll share this entire code. आराम से उसको try करना. ठीक है, ठीक है. अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ो. I'll share this entire code. Don't you worry. Right? Okay. So I can see many of you guys are getting the correct answer. कितने pop statement है? How many pop statements do we have? 3. So are we gonna remove these 3 elements? That's for sure. That's for sure. Right? तो जो new array होने वाला है after these 3 pops, it's gonna be 1, 2, 3, 4. That's it. इतना ही. And then we are trying to push array dot length. So at this condition, what's the length of the array? At this condition, 4. So should I push 4 inside it? So after this, 1, 2, 3, 4 and 4. Yes,
Yes, so and comment it. There you go. Easy है, easy है. How can we use methods? Is that clear? Arrays में method होंगे, objects में method होंगे. आगे चल के दिखाऊंगा functions में भी methods होंगे. ठीक, बट आगे चल के आराम से बताऊंगा. जस्ट प्रीफिल के हाँ होने वाला है ऐसा कुछ. Keep that in. Clear है? क्लियर है. तो गाइज इन नोट्स मल्टीपल ऑफ दीज मेथड्स आर मेंशन. आराम से पढ़ना. एक होमवर्क था ज्वाइन. लेट्स से लास्ट और एंड के बजाय वो ना अटैच समथिंग इन हियर, राइट, इन सम रैंडम इंडेक्स. तो ट्राई टू डू दैट आल्सो. यस श्वेता, करेक्ट. अनशिफ्ट एंड शिफ्ट आर फॉर स्टार्टिंग, एडिंग इन स्टार्ट एंड रिमूविंग इन स्टार्ट. ठीक, पवन करेक्ट. स्लाइस विल बी यूज्ड, स्लाइस विल बी यूज्ड. जस्ट ट्राई, आराम से ट्राई करो. Everything is attached, guys. Notes is already there. All you have to do is click on notes. That's all. That's all. Take to go on MDN and explore these things. That should be clear. Take koi doubts so far? Any doubts? Please let me know. Clear है? Clear है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? str is the is count the space or not when we are accessing the symbol alpha. Okay, I'm not sure what you're asking, but let me reiterate it in here. Let's say if I write let str equals to HIFA, right? So abhi if I do str.length, what am I gonna get, guys? Am I gonna get 4 or am I gonna get 8? What am I going to get? str.length, right? Because in string, the spaces are also counted, right? Strings में spaces are counted. So if I do console.log str.length, you guys will see कि हमें 8 मिल रहा है. Because this 1, this 2, this 3, this 4. 4 spaces है and 4 elements है. So finally it's 8. Clear? Clear? So in string, you have to keep that in mind. Take whose doubt was it? I hope it's clear. पता नहीं किसका था, but is it clear, right? Can we reverse loop? Spaces are also added, sir. Yeah, spaces are added. Can we use loop on let a 1 to 3 and reverse it? Yeah, sure thing. So again, guys, MDN approach karo, we'll be able to find everything, right? So let's say if I go and write reverse, right, reverse MDN. So it's gonna show me the inbuilt function for MDN, right? So for now, अभी के लिए ये prototype skip करना. I'll explain this thing. Prototype अभी के लिए skip करो. Just talk about array dot reverse, right? So you have these many methods, right? इतने सारे methods है. You can just go through them and just try to write it. ठीक, nested loop will be covered in next lecture. गौरव सब cover होगा, but धीरे धीरे. ठीक है guys, so you can access everything here. ठीक, but you have to start exploring MD, right? करेंगे ठीक. गाइस नोट्स व्यू में देखो, मेरे को जो है ना, मेरे को एडमिन व्यू दिखता है, राइट? तो इन एडमिन व्यू ना आई हैव अ सेक्शन वेयर आई कैन क्लिक ऑन नोट्स एंड आई विल सी कि हाँ आपको नोट शेयर हुआ, राइट? यू गाइस कैन जस्ट जहां पे लेक्चर है जस्ट गो देयर. रिकॉर्डिंग के नीचे यू शुड हैव दैट, राइट? चलो किसका आउटपुट? दिस वन. Okay, chalo. I'll share you guys one more question. Tell me what do you guys think about that. So, chalo, let me copy this one and I'm just gonna comment this one out and Slack पे nope, नहीं. Guys, I've pasted this code. Refresh करो एक बार जो भी link share किया था मैंने, and you should be able to access this new code. Take now all you have to do is update the name property with its uppercase value. So you have this name and you have to update everything. Basically, Alice should be in this format, right? And finally, you have to print this thing, right?
So can we do this, folks? Can we do this? Just copy this code, refresh karo your link. I'll share the link again if you have lost it, and tell me what's the output. आराम से देखो और बताओ. No, should we send it on Slack? No, because that will be more of a spoon feeding. अच्छा चलो, if you guys have that much error ना, many of you guys are able to access it. Lecture के बाद I'll let someone share and they can tell you कि कहाँ पे access करना है जिनको नहीं मिल रहा है. ठीक है? Just wait for the lecture to end. We'll end shortly, 5-6 minutes more. इसका solution बताओ जल्दी. प्रशांत, very good, very good. सो गाइस, ये जो हैश एंड दिस थिंग है ना, ये वो है, ब्लैंक्स है, एंड इसको फिल करना है आपको. ठीक है? तो एक्सक्यूज मी अगर मैंने पहले नहीं बताया. There you go. One more minute, folks. आराम से देखो. Tell me what should be the replacement of these Phillips. नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? सॉल्व नहीं हो रहा कि कोड नहीं मिल रहा है? कोड नहीं मिल रहा है, जाके रिफ्रेश करो. रिफ्रेश करो, लिंक को रिफ्रेश करो. गाइस, रिफ्रेश इट once again. एक और बार कर लो, एक और बार कर लो. अच्छा, is no one able to access it? Okay, let me refresh it from my side once. ठीक है, अभी you should be able to access it, I think. Refresh करो. नहीं? Okay, तो I'll share it in our chat section. वहां से access करो. Some of you guys are able to access it. Okay, so that's why I'm getting confused. ठीक है, ठीक है. So yeah, I can see many of you guys are doing it. Alright, चलो guys, तो साथ में ही discuss कर लेते हैं. Let's do it together. Basically, we have a method which is greet, right? And in this greet method, I am passing some arguments which I'm accepting as parameter in here, right? That argument is basically morning, and I'm calling this greet function. Now, first part of this question is basically we have to update the name property with uppercase, right? So how can I access this name, specifically this name? By writing this dot name, this dot name. So this thing should be updated with, this thing should be updated with this dot name. उसी तरीके से यहाँ पे भी this dot name. Right? Now to convert a string into uppercase, we have to use a method which was to uppercase, and just call it. ठीक? So now this Alice will be converted into uppercase, right? उसके बाद, if we have to print this statement, what we can do is, rather than going for this, I can just go and write return good morning, and I'll write plus my name is, and I can write name. Take, or rather this dot name. Take, this thing will be string, this thing will be string, and finally I'll just print it. Right? तो print करने के लिए shell पे जाओ, write node and write the file name. So it's index.js. Take, so it says good morning, my name is Alex. Clear it? Clear it? Clear it? Take parameter. Okay, so parameter, again you can just keep on adding. Parameter के लिए it's passed in function, so you don't have to add that. Just directly you can add the time is, I can make this a string, and I'll add a space, and I'll write time of day. So if I go and run it again, we'll have good morning, my name is Alice, the time is morning. Clear? Clear? ठीक है. So I hope
today's lecture was more fun, right? Because last lecture में क्या था, we were just talking about the tools, right? जो कि हम use करने वाले हैं, but आज हमने क्या किया, we implemented those tools, right? So I hope today's lecture was more fun and काफी चीजें और समझ आएंगी. All good? All good? Will we explore more inbuilt methods? MDN पे जाके करेंगे. तो गाइज ये थोड़ा बहुत होमवर्क करना ही है. एटलीस्ट 75% असाइनमेंट डेली सॉल्व कर लो, बाकी 25% आराम से छुट्टी पे करना. बट कीप अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि हाँ, आई विल कंप्लीट 75% ऑफ असाइनमेंट एट लीस्ट. ठीक. तो अपना 100% देने का मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव टू कंप्लीट 100% एवरीथिंग. 100% देने का मतलब ये होता है कि यू हैव अ कैपेसिटी एंड यू आर फुलफिलिंग दैट, राइट? तो कीप अ कैपेसिटी ऑफ 75% एंड रेगुलर बेसिस पे फुलफिल करो. कर सकते हैं एवरीवन? एवरीवन, कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? अगेन यू हैव फ्यू मोर ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस क्या है? वंस द लेक्चर एंड्स यू हैव टू सॉल्व. क्या सॉल्व करना है? क्विकली क्विज. फॉर श्योर क्विज तो सॉल्व करना ही है, बिकॉज दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड आपको कितना पता चला, right? Then go and check your notes. I'll share these codes also in your notes. Just access it, right? Except for that, fill everything. कोई